ओके, आज का हमारा टॉपिक है द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी बेसिकली ये द फर्स्ट वॉर था ब्रिटिश और इंडियन नवाब द बंगाल नवाब के बीच में, जो कि एक रूट मैप तैयार कर देता है कि मतलब इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर में द ब्रिटिश यूरोपियन कंपनी का फ्यूचर क्या होगा, ये डिसाइड करता है। तो अगर हम बात करें तो बैटल ऑफ प्लासी ये जो था, ये हमारा जून जून 1757 में एक वार हुआ था, इसके बीच बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल नवाब ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी, द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर के बीच में एक वार हुआ था एंड दैट विल डिसाइड द फेट ऑफ द ब्रिटिशर्स। अगर हम बात करें इसके कॉजेस की, तो रीजन क्या था बिहाइंड का, तो अगर हम बैक में देखें तो ये एक जो कमर्शियल टेंशन था, जो कि नवाब बंगाल के नवाब और ब्रिटिश यूरोपियन कंपनी द ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जो हमारा फर्रुख सियाब जब मुगल एम्परर थे इन द 1713 से लेकर के 1719 तक, उस टाइम पे उन्होंने 1717 में एक रॉयल फरमान दिया था। उसमें क्या बोला था कि मतलब he allowed the Britishers to freely trade into the region of the Bengal, thus paying the 3000 rupees per month, और जो कस्टम ड्यूटीज थी वो फ्री कर दिए थे उन्होंने इन द बंगाल एंड हैदराबाद सूरत रीजन में। तो अगर हम इसके कॉजेस की अगर हम बात करें, अगर इसके हम कॉजेस की बात करें, व्हाट आर द कॉजेस की अगर हम बात करें, तो द फर्स्ट वाज द रॉयल फरमान ऑफ द 1717 by मुगल एम्परर फर्रुख सियार। मुगल एम्परर फर्रुख सियार ने क्या किया था, इन्होंने 77 में जो रॉयल फरमान था, एंड ही ग्रांटेड द फ्री ट्रेड, मतलब नो कस्टम ड्यूटी फ्री ट्रेड इन द रीजन ऑफ द बंगाल, Hyderabad and in the Surat, just paying the rupees 3000 per year. इन्होंने मुगल एम्परर ने फर्रुख सियार ने कोई फ्री ट्रेड जारी कर दिया था, जिसमें कस्टम ड्यूटी इनको नहीं पेड करना पड़ता, जब 3000 पर ईयर में इनको एक शुल्क एक जमा करना पड़ता था, एंड रेस्ट दैट द नो कस्टम ड्यूटी, इसको हम बोलते थे दस्तक। एंड इट वाज द मैग्ना कार्टा द वन रीजन, एंड द सेकेंड रीजन इट वाज द ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी अगर हम बात करें, दैट वाज द इन द 21st June 1756, till the time of the Murshid Ali Khan, even the first one who was the founder of the Bengal, it was the Nawab Murshid Ali Khan। उसके बाद हमारे अलवर्दी खान 1740 से लेकर 1756 तक ये नवाब थे, and earlier he was the नायब सूबेदार ऑफ द बंगाल, नायब सूबेदार ऑफ द बिहार, नायब सूबेदार ऑफ द बिहार थे कौन, अलवर्दी खान। तो उन्होंने जब अलवर्दी खान in their Nawab time period from 1740 to 1756 तक, he didn't allow the fortification of the European companies in the Bengal। और जब इनकी डेथ हुआ थी 1756 में, उसके बाद आते हैं 1756 to 1757 में his grandson, the daughter son, that he was the Siraj-ud-Dawla। सिराजुद्दौला जब 1756 में जब बंगाल के नवाब बनते, तो इन्होंने भी लाइक दैट अलवर्दी खान, इवन ही डिडंट अलाउ द फोर्टिफिकेशन ऑफ द यूरोपियन कंपनी, बट जो यूरोपियन कंपनीज लाइक दैट द यूरोपियन कंपनीज जो फैक्ट्री एरियाज था इन द फ्रेंच का, इन द चंद्रनगर एरिया में, इन द हुगली एरिया में,
ब्रिटिश कंपनीज जो थी उन्होंने ब्रिटिश में ब्रिटिशर दे स्टार्टेड द फोर्टिफिकेशन, मतलब वो फोर्टिफिकेशन करने लगे एंड पुटिंग द गन ऑन देयर बाउंड्री वॉल। तो इन्होंने सॉरी सिराजुद्दौला ने इन फोर्टिफिकेशन को स्टॉप करने के लिए बोला, बट the British they didn't stop, so that's why the Sirajuddaulah he attacked on Hooghly. Hooghly पर अटैक किया इन्होंने इन द 15th of the June in the 1756 में, and he captured the total area of Hooghly and the फोर्ट विलियम को इन्होंने कैप्चर कर लिया। और इन द 20th of जून को इन्होंने क्या किया, जो अराउंड वहां पे 146 मैन थे, क्योंकि उससे पहले जो भी वहां पे गवर्नर थे वो लोग तो इन द बैक साइड से दे फ्यू, बट जो 146 पर्सन वहां पे अंडर द हेड ऑफ द हॉलवेल, जो हमारे वहां पे 146 पर्सन थे, उनको सिराजुद्दौला ने कैप्चर किया और उनको एक रूम में बंद कर दिया। और द रूम साइज वाज वेरी लेस इन द कंपेरिजन टू द पीपल्स नंबर। वहां पे सफोकेशन की वजह से अर्ली मॉर्निंग एट द मतलब अर्ली मॉर्निंग 20th जून को इन्होंने कैप्चर किया उस रूम में, और इन द 20th जून को दैट वाज अराउंड द 26 आउट ऑफ द 146 ओनली दे अलाइव एंड द रेस्ट वर डेड। सो ब्रिटिशर्स कॉल्ड दिस ट्रेजेडी एज द ब्लैक होल ट्रेजेडी, क्योंकि ये हुआ था इसके वजह था। और द थर्ड रीजन वाज एंड द थर्ड रीजन it was the Shaukat Jung. He was the Faujdar of Bihar. He was Faujdar of the Purnia. बेसिकली ये फौजदार क्या होते हैं, अगर हम बात करें who was the फौजदार, अगर हम बात करें kingdom was divided into Suba, and Suba are the province, and then Suba province is divided into the Pargana. Pargana was divided into villages. So the head of the Pargana, he was the Faujdar. So Shaukat Jung, he also claimed to the throne, the third region, and the fourth region, it was the Ghasiti Begum. She was the daughter of Alivardi Khan, or the aunt of Sirajuddaulah. She also claimed to the throne, Sirajuddaulah. And the other was there Mir Jafar हो गया, राय दुर्लभ, Amir Chand. They were the other peoples that who basically they started a conspiracy against the Nawab. That led to this was the it is the causes of the Battle of Plassey. And अगर हम बात करें in the after the black hole tragedy that was in the June 1756 में जब black hole tragedy हुआ था, at that time the Robert Clive was the governor of the Madras province, because Britishers they have established their factory in the different parts of the country, like in the Madras region, in the Surat, also in the Patnas में, in the Bengals में, the Hooghly and the Fort William. So at that time the Robert Clive he was at the Madras and he moved toward the Bengal moved here. That led to the one war, that war हुआ था, war between the Sirajuddaulah and the Robert Clive, and it was the treaty of the Alinagar. They signed a treaty of the Alinagar when in the Feb of the 1757 में,
सो अलीनगर जो था ये भी हमारा, अलीनगर भी एक कलकत्ता का नेम था। when the Sirajuddaulah he attacked and captured Fort William in the 20th June and 50th June to the 20th June of 1756 में, then he captured and renamed the Fort William as the Ali Nagar, and that is the, even the Ali Nagar of Calcutta was the same because the name was changed by the Sirajuddaulah in the 1756 में Ali Nagar. इसमें इन्होंने बोला कि the Nawab, even the Siraj, he allowed fortification. He allowed the fortification, and the other, even the other. He also promised to not allow the other European companies in the region. Not allowed other European companies to establish their factory in this region, the Treaty of Ali Nagar, and that led to the war of the Battle of the Plassey. In the Battle of Plassey, that was the East India Company and the Nawab. And before the Battle of Plassey, the Robert Clive he made a alliance that was a secret alliance with the Shaukat Jung and the Ghasiti Begum, Rai Durlab, and the Amir Jung. They were the wealthy people of the Bengal. They also claimed to the throne. The City Begum and the City Begum and the second was the Saufajang. They claimed to the throne. The other people they also like that Mir Jafar. He wanted to become the next Nawab. That's why Robert Clive, he made a secret alliance with the Shaukat Jung plus the City Begum plus Amir Chand plus Amir Chand हो गया, the City Begum, Shaukat Jung, and plus was the Mir Jafar. And the Mir Jafar he was promised to be the next Nawab of the Bengal. So it was in the June. The Nawab was the Sirajuddaulah. Plassey was the region in the Nadia district of the Bengal. वार हुआ and the Sirajuddaulah. So Mir Jafar कौन था? Mir Jafar he was the Mir Bakshi means the military head था. When the battle was started, the Mir Jafar मीर जाफर ने क्या किया वहां पे, इन्होंने धोखा दिया। कैसे? इन्होंने नवाब को इन द बैटल फील्ड में लाया, उसके बाद इन्होंने अपनी जो मिलिट्री, बिकॉज ही वाज द मिलिट्री हेड, तो इन्होंने जो इनकी मिलिट्री थी उनको इन्हें स्टॉप कर दिया और इवन द सिराजुद्दौला से बोला है कि मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है, आप यहाँ से निकल जाइए, मैं मिलिट्री को संभाल लूंगा। और व्हेन द सिराजुद्दौला ही लेफ्ट द बैटल फील्ड, देन ही वाज कैप्चर्ड and killed by Miran. Was Miran? Miran was the son of Mir Jafar. Because the Mir Bakshi जो थे, इन्होंने अपनी सेना को अटैक करने के लिए बोला ही नहीं इनके आगे। The only person who fought from the Nawab side was the Mir Badan. Madan was fought bravely from the Nawab side, but after he was killed by the Britishers, the Nawab he left the battlefield and was captured and killed by the Miran. उसके बाद after that the battle of the Plassey, the Sirajuddaulah was killed. Then after the war, then it was the Mir Jafar. He became the next Nawab of Bengal, 1757 to 1766, and Mir Jafar he granted the zamindari rights Pakistan 24 Pargana. He also paid handsome amount
to the Robert Clive plus other officers, and he also promised to not allow other European country other European companies to establish their factory in Bengal. And the next one is that he he took away all French possession and to give them give to Britishers. सो देखिए, जमींदारी राइट्स अगर हम बात करें तो जमींदारी राइट्स वो होती है थी दैट गेव देम राइट्स टू, मतलब जमींदारी राइट्स दैट गेव द जमींदारी राइट्स थी वो ब्रिटिशर्स को मिल गए, मतलब एंड दैट दैट दिस राइट इट अलाउड द ब्रिटिशर्स टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम दैट रीजन, इसलिए जमींदारी राइट्स ये हैं। और उसके बाद इन्होंने मीर जाफर नेक्स्ट नवाब हो गए, अदर यूरोपियन कंपनीज को भी दैट ही विल नॉट अलाउ। एंड द नेक्स्ट वन दैट जो ब्रिटिश फ्रेंच का पोजीशन था, फ्रेंच दे एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री इन द चंदन नगर एरिया ऑफ द बंगाल। द मीर जाफर ही टूक अवे एंड देन गिव टू द ब्रिटिशर्स। दैट्स ऑल अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी। हमने देखा कि बैटल ऑफ प्लासी का रीजन क्या था, कॉजेस कहाँ थे, जो कि 1777 जब फारूक सिया जो रॉयल फरमान को ग्रांटेड किए थे, इवन दैट वाज द इन द नेक्स्ट 50 to 60 years वो एक मेजर कमर्शियल टेंशन ही था बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फिर उससे क्या था कि वो नवाब को वो लॉस होता था रेवेन्यूज का, बिकॉज ब्रिटिशर्स दे वर गेटिंग द फ्री ट्रेड राइट्स जस्ट पेइंग द 3000 रुपीज टू द मुगल एम्परर। वो एक मेजर कॉन्टेशन था जो कि एक मेजर इन द नेक्स्ट 50 to 60 years में वो एक कॉन्फ्लिक्ट में बना रहा। और सेकंड हमने देखा कि सिटी बेगम को इन्होंने सपोर्ट किया, उसको शौकत जंग को, देन अदर पीपल द स्पॉजेस हो गए, देन बैटल हुआ एंड देन रिजल्ट आया। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी। थैंक यू।